headquarters of Jammu, Kashmir, Ladakh Indian Air Force, and today the Air Force is celebrating its Diamond Jubilee here, where the top brass of the Indian Air Force as well as the Indian Army have gathered here. These are the Apache helicopters that are arriving here. One of the finest and latest technology when it comes to the use of the military. These are used not only by the Indian Air Force but also by the US Army. This is most advanced multi-role helicopters, be when it comes to the precision strikes or be it to carry out multi operations, be it the rescue operations or any kind of landing operations whenever it is necessary. So these are the AH-64 Apache helicopters, and Indian Air Force has a fleet of 22 AH-64E Apache fleet helicopters. These are the fleet attack helicopters of the Indian Force. They are the strength of the true strength of the Indian Air Force, which we are showing in our frames. The Apaches arriving here. This shows the might of the Indian Air Force. I'll request Gaurav to continuing with the visuals that the fleet of this mega fleet of the Indian Air Force that is being shown here, the strength that is not only to display but also to send a message not only to China but also to Pakistan that this is the might of the Indian Air Force. We are right now standing in Udhampur, which is the headquarters of the Northern Command that looks after the critical areas, be it the borders with the Pakistan or the borders with the China. And the message that is being sent by the Indian Air Force right from here, from ground zero, makes it very clear that be it the Indian Army or the Indian Air Force, they will decimate any nefarious plot of the enemy, because in 1965, 71, 1999, these were the joint operations that were carried by the Indian Air Force as well as Indian Army against the adversaries, and India got a befitting reply. We'll try to speak to some of the NCC cadets who are here to see this. मुझे बताइए आपका नाम? नेहा नाम है। नेहा, मुझे बताइए कितना अच्छा लग रहा है एयर शो देख के, यहाँ पर लेटेस्ट हेलीकॉप्टर्स जो टेक्निक्स बताई जा रही है? यार मेरे को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम टीवी पे देखते आए थे, आज हम लाइव देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। बहुत जो अच्छा लग रहा है। आप मुझे बताइए कहाँ से आप आए हैं? सर फिलहाल तो हम उधमपुर से आए हैं। बेसिकली मैं सुधमा देव से हूँ। सर यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आज तक तो हम सिर्फ टीवी में ही देखते आए थे और यहाँ पर हमें लाइव देखने को मौका मिल रहा है और इतना अच्छा लग रहा है सर, मैं बता नहीं सकती। So the children they cannot, the NCC cadets cannot explain how they are actually feeling. मुझे बताइए अब लेटेस्ट जो हेलीकॉप्टर्स और सब चीज़ें आप देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? जोश आता है? यस सर, कभी सोचा नहीं था कि हम अपनी आंखों से देखें, आज देख रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत प्राउड हो रहा है कि हम यहाँ पे आए और आज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं लाइव। So they are really proud of what they are seeing. We'll try to speak to some more NCC cadets here. आप मुझे बताइए इन जहाज़ों के बारे में आपने किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा, देखने में कैसा लगा? देखने में सर बहुत ही अच्छा लगा हमें देखने में। हमने किताबों में पढ़ा था इनके बारे में, इन एनसीसी में रह के हमने वेपन्स के बारे में पढ़ा था, इन प्लेन्स के बारे में पढ़ा था, सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, लेकिन देखने को कभी मिला नहीं था। आज प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं तो बहुत अच्छा हमें लग रहा है और प्राउड फील हो रहा है कि हाँ हमारे देश में ऐसा है और हमारे इस उधमपुर में ऐसा हो रहा है और बहुत अच्छा सर हमें। So they are really very happy to see the might of the Indian Air Force here on ground in Udhampur. In a short while from now, there will be an assault landing by the Indian Air Force. This is one of the key operations that the Indian Air Force carry out in the battlefield, and one of the challenging tasks to do so when they will be landing, doing an assault landing from here using the Apache, using the Super Hercules C-130J, which is one of the giants of the Indian Air Force that performs the multi-role in the Indian Air Force. I'll request Gaurav to keep showing you the visuals that the children here have arrived, be it the NCC cadet, be it the school children. We'll try to speak to some more children. We'll try to get some more voices so that we can have an idea how these children actually feels. आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है बड़े जहाज जो हैं भारतीय वायुसेना के, वो यहाँ पर आपको देखने को मिले? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ नया देखने को मिल रहा है और बहुत ही प्रेरित हो रहे हैं हम और देशभक्ति की भावना भी जाग रही है। पता चलता है कि कितनी कठिन परिस्थितियों में जो है भारतीय वायुसेना काम भी करती है, कितना चुनौती भी रहता है। जी एकदम पता चल रहा है कि कितनी कठिनाइयों से गुजर के इनको सफलता प्राप्त होती है।
So they are also getting to know that how the Indian Air Force has strived hard so as to ensure that the unity and the sovereignty of the country remains intact. And also I'll request Gaurav to show you that the senior officials of the Indian Army, they too are here, be it the Northern Army Commander and the other officers who are here so as not only to overlook the preparedness, these are the operational preparedness of the Indian Air Force, but also to ensure that how things go smooth. A couple of minutes back, we have seen the Apache helicopter, the attack helicopters, the 22 Apache, the fleet of the Indian Air Force. And in a short while from now, we'll see that how assault landing is done from Super Hercules C-130J. And these are the students, the NCC cadets, the students from the IIT Jammu, those who have arrived here from the various parts of the country. We'll try to speak to them also. आप कहाँ से आए हैं? सर राजस्थान से हैं। ये बताइए, भारतीय वायुसेना का शौर्य देखकर कैसा लगा? सर बहुत ही उत्साहित फील हो रहा है, गर्व हो रहा है अपने देश पे, देश की वायुसेना पे। ये जो ताकत है उसको देख के हमें बहुत खुशी हो रही है। आप मुझे बताइए, आप कहाँ से आए? मैं भी अलवर राजस्थान से आए हैं। भारतीय वायुसेना का पराक्रम देख के कैसा लग रहा है? मतलब बहुत सही लग रहा है, क्या ही बताएं। अब शब्द नहीं बचे हैं, इतना अच्छा कि हमारे भारत में ऐसा भी है कुछ। रियली फीलिंग प्राउड। आप मुझे बताइए, अब कई चीज़ें जो हमने टीवी पे देखी थी या जिनके बारे में सुना था, जब उनको खुद यहाँ पर गरजते देखा, राफेल की बात की जाए या सुखोई 30 की, कैसा लगा? मुझे पहली बात तो कहना चाहूँगा बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज तक ऐसा कुछ ज़िंदगी में नहीं देखा था, नहीं। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है और काफ़ी मतलब कुछ अलग है, मतलब चीज़ सीखने के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। अच्छा जो है वो लग रहा है। कुछ स्कूली बच्चे भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। एनसीसी के कैडेट्स यहाँ पर हैं और एक खास संदेश जो है भारतीय वायुसेना की तरफ से देने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिरकार लोगों को भी इस बाबत जो है अवगत करवाया जाए। एक स्कूली छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। आप मुझे बताएं, कैसा लगा? देशभक्ति का जज्बा जो है वो भर जाता है। सबसे पहले तो सभी को नमस्ते। मैं सुजल आज आर्मी पब्लिक स्कूल धार रोड की तरफ से यहाँ पर उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने अपने वीर जवानों को इन प्लेनों के माध्यम से अपनी वीरता दिखाते हुए देखा, मैं चाहता हूँ कि इसी वीरता और पराक्रम से मैं अपनी भारतीय वायुसेना को सर्व करूँ, मैं अपने दुश्मनों का नाश करूँ। और मैं चाहता हूँ इस वायुसेना के प्लेन हमारे दुश्मनों के लिए एक ब्रह्मास्त्र बन सामने आए जो उनको नष्ट कर दे। So this is the message from the younger generation that they want to decimate the enemy, and this is the fleet. This is the assault landing of the Indian Air Force. One of the major challenges that the Indian Force actually has when it comes to land during a war zone. These are the C-130J Super Hercules that will now be coming here almost in next 30 seconds, and from where the Jawans, the Garud commandos of the Indian Air Force will be making a landing. This is one of the toughest one of the giants, the Super Hercules, and this is doing assault landing here at the Udhampur headquarters of the Jammu Kashmir Ladakh. See this giant. This was one of the top aircrafts of the Indian Air Force, Super Hercules C-130J, which is doing assault landing here. And this is very crucial because assault landing plays a very key role when it comes to the war zone or supplying of the key ammunition or the stores during any war. And I'll request Gaurav to keep showing you this giant C-130J that is making an assault landing here in the Udhampur station headquarters of the Indian Air Force, clearly showing the might of the Indian Air Force, that how Indian Air Force is capable of making landing at any given place, at any given terrain. This is Indian Air Force C-130J. This is what we are showing you. Super Hercules doing the assault landing. And now the Garud commandos of the Indian Air Force. This is how the battle operations are carried out. The Garud commandos of the Indian Air Force making assault landing here in Udhampur. This is on a situation when a war is going on, and these kind of operations are carried out here on ground zero. This is the might of the Indian Air Force.
and we will be continuing with this rolling coverage from Ground Zero in Udhampur right after this short break.